Hello, friends, and welcome back to another travel vlog. आज हम लोग कोलकाता से we're heading towards Jhargram, and here you can see me prepping for the trip. मैं अपना backpack and also the saddlebags prepare कर रहा हूँ. I'm tying them up with the bungee cords, and once that is done, हम लोग टूर के लिए निकल पड़ेंगे. And I'm all excited, so stick around. और अगर आपको बाइक टूर्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स पसंद है दैन डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना अगर कुछ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू. Now, Jhargram is a district in the state of West Bengal, India. So it was formed basically around April 2017 by splitting from Paschim Mednipur, which is again another district in West Bengal. Some of the things that मतलब कोई भी अगर झारग्राम ट्रैवल करने के लिए सोचता है तो बेसिकली देयर इज़ बेल पहाड़ी काकरा झोर. इफ़ यू कैन देन डेफिनेटली गो एंड विजिट घाटशिला विच इज़ इन झारखंड. झारखंड इज़ अ सेपरेट स्टेट ऑल टुगेदर इन इंडिया बट इट्स वेरी क्लोज टू झारग्राम. सो अगर आप जा सकते हो तो डेफिनेटली घाटशिला भी आपको विज़िट करना चाहिए. So the total kilometers from Salt Lake to Jhargram is close to 180 kilometers, which takes about 4 hours roughly. So we started quite early in the morning so that we can reach on time, and we're staying at the Jhargram Raj Palace. So एक बार हम लोग check in कर देंगे then we will think about थोड़ा बहुत sightseeing भी अगर कर सकते हैं आज शाम को then that would also help. So yes, enjoy the ride and do stick around. हम लोग और भी नए नए videos and new places will continue to show on the channel. So yeah, let's see. ये माँ फ्लाईओवर है. हम लोग अभी सॉल्ट लेक से EM बाईपास होकर निकल के वी टुक द माँ फ्लाईओवर क्योंकि अभी इट्स आफ्टर 6 AM सो वी कुड टेक द माँ फ्लाईओवर. जनरली हम लोग सुबह अगर निकलते हैं तो माँ फ्लाईओवर नहीं ले पाते हैं क्योंकि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक तो ये माँ फ्लाईओवर फॉर मोटरसाइकिल्स एंड बाइक्स इनएक्सेसिबल होता है. बट खैर एनीवे कीप वॉचिंग and I'll show you more of the route that I'm taking towards Jhargram. Now we are on the National Highway 16 and we are headed towards Kolaghat. So Kolaghat पे एक एक्सप्रेस फूड प्लाजा करके एक रेस्टोरेंट है. We love the food there, so we're planning to have a breakfast there. So that's our first destination, which is about 78-80 kilometers from Salt Lake. So it will take about 2 hours. तो अभी वहीं पे मिलते हैं. वेल आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बाइक्स कहाँ से आ गए. वेल दिस वाज अ संडे एंड संडेज़ क्या होता है कि कोलकाता के आसपास के जितने भी बाइकर ग्रुप्स हैं मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो ये लोग ना लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं या फिर दे गो टू द आउटस्कर्ट्स बेसिकली टुवर्ड्स कोलाघाट टू हैव द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लंच और करके फिर वो वापस आ जाते हैं टुवर्ड्स कोलकाता. सो बेसिकली दैट्स द रीज़न आप देख रहे होंगे वहाँ पे कि काफ़ी सारे कावासाकी के बाइक्स थे and also other bikes as well, which is not my kind of bike but then yeah, जिनके लिए वो पसंद है उनके लिए वो पसंद है.
ঠিক আছে আসছি। Now we have entered Jhargram and as you can see हम लोग dense forest के बीच में से जा रहे हैं. Very soon we'll reach the Jhargram Raj Palace, which will be the stay and location, the final destination for our ride. So yes, let's go. বুকিং আছে ভেতরে, বুকিং আছে, সাইড দিয়ে ঢুকবে? ঢুকবে একটা? হ্যাঁ কোন দিকে একটু থাকবো আমরা? কোন দিকে? হ্যাঁ কোন দিকে? ওকে.